So what happened that tomorrow is gonna be very heavy snowstorm. So a possibility that its mountain gonna be closed. So we have a plan B. So tomorrow we going for cycling instead of skiing. And on Tuesday probably we will go for skiing because girl wants to go for skiing. तो क्या हुआ कि कल बहुत ही स्नो पड़ने वाला है यहाँ पर टाउन में सारी जगह स्नो ही दिखेगा ये जो कह रहे थे तो कलीग तो उसने कहा कि कल तो बहुत ही हेवी स्नो स्टॉर्म है तो सुबह को पता चलेगा कि माउंटेन ऊपर ओपन है या क्लोज है तो फिर हम लोगों ने क्या सोचा कि टुमारो हम साइकिलिंग करने के लिए जाएंगे See you in the morning. In the morning. Enjoy. You too. Thank you. Snow. Thank you. So Lakman park a car over there. We already hire a ski gear, so we're gonna leave it there. And I'm here at the countdown to get a milk and a bread. And I'm gonna ask here countdown staff as well that what time they closing because I heard that within a few hours all road and everything going to be closed because of snowstorm. I can't find anything like a milk and a bread I'm looking for because I'm used to going in that supermarket. Aha, I found it. So I got a milk, bread and some smoothie. So I got a bread, milk and some juice as well and Ria and Priya got some food for afternoon tea and now we're going to get a key from owner. We had a book a batch something. So we're gonna go and get the key for our accommodation. So अभी हम जा रहे हैं and और कल वहाँ से आपको थोड़ा ड्रोन का फुटेज भी दिखाऊंगा अगर अच्छा रहा वेदर तो अगर स्नो बर्फ़ गिरेगी तो ड्रोन में नहीं उड़ाऊंगा. But tomorrow we all looking forward because first time we come last couple of years but we only can see snow right on the top of the mountain. ऊपर माउंट रूपेहू पर हम स्नो देखते हैं तो इस बार पहली बार टाउन में होगा. पे ही स्नो होता है जब भी हम आते हैं यहाँ पर नहीं होता. सो क्या होगा कि अब हम कल हम यहाँ पर भी स्नो दिखेगा वो मज़ा आ जाएगा. And we apologize for any inconvenience on the Hindi. Yes, we both just struggling for Hindi. We are staying in this home. Luckily, we didn't have to reply, otherwise we won't be able to make it here. It's very cold and windy and we've got key now for beach. So this is our beach. We're going to stay for 3 days and it's a beautiful place. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी. वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट. नमस्ते आप सबको, शीतल का नमस्कार. एंड हमने ब्रेकफास्ट किया अभी.
So we just had our breakfast and girls still, sleeping. So once they gonna wake up, then we gonna start our day, and we're going to do some day activity. And it's cold at the moment, but it's beautiful. I'm not wearing anything. Getting in. Is this waterproof? No. Oh. Thank you. Little while ago it was snow falling. By the time I get ready, all GoPro and gimbal and everything is finished, but that's alright. Today all road is closed, and that's why we now decide to go for cycling. तो थोड़ी बार पहले स्नो फॉलिंग हो रहा था, तो कोई बात नहीं, वापस होगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगी. बट अभी सारे रोड क्लोज हो गए हैं, तो हम साइकिलिंग करने जाने वाले हैं. एंड कल सुबह सब रोड ओपन हो जाएंगे, तब हम रिया एंड प्रिया को स्की करने ले जाएंगे. तो अभी मैं वहाँ पर एक नदी जा रही है, वहाँ पर वॉक करने जाने वाली हूँ. तो थोड़ा बहुत यहाँ कुछ दिखने को है, तो वहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगी. So Can I? no, Yes. no, Yes. no, Yes. no, I don't have a ski jacket. Get that.
coming into the glass. It's just Now we all going for hiking, something different experience. Because of the weather, so we change our plan again, not going for cycling. Now we going for hiking. So yeah. पहाड़ चढ़ने के लिए जा रहे हैं. बहुत बहुत ऊपर जा रहे हैं. No, it's just only 2 kilometers, but he is in a fun mood. बहुत स्नो के अंदर में जा रहे हैं हम लोग. बहुत हेवी बारिश हो रही है. नहीं, हेवी स्नो हो रहा है. Snow को दिखने में दिक्कत हो रही है. बर्फ गिर रही है यहाँ पे. ऐसी बर्फ तो कभी ऐसी कितने सालों के बाद गिरी है यहाँ पे. आइए जी बनाओ. How come? Because of your Hindi language? Yeah. Just the way he said it though, like it was silence then. Can we just do this thing here? Taking ages to getting ready. I'm sorry. 2.5 kilometers. There is a 12-kilometer hike, but we only going to the bridge and then we come back. So आगे एक ब्रिज है, वहाँ से अच्छा व्यू आता है. वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से मुड़ जाएंगे, वापस आ जाएंगे. क्योंकि हमारे पास प्रॉपर हाइकिंग गियर नहीं है, जूते वगैरह. So ज़्यादा अच्छा नहीं. So this is the whole information. We can ride the bike here. It's really good. But because Ria, Priya and Shital not doing biking much, we decide not to do the biking because it's a bit snowy, slippery. This is such a beautiful place. And जब भी मैं बड़े पेड़ को देखती हूँ तो मुझे उसको हग करने का जी चाहता है. I don't know. I always feel like to hug when I see, big tree. It's just like, connection. This is all the information they provide in here. It's quite nice. बहुत अच्छा है. ये सब गाइडेड है. सब यहाँ लिखा हुआ होता है तो हम आसानी से जा सकते हैं. All the boards and everything, they provide everything, information and all of that. So it's quite nice trek. It's around 12-kilometer trek. It's built for the bicycles, but it's mountain bikes, but you can hike on it. So it's nice. At the moment it starts snowing, so it's a really nice feeling.
बोलिए बोलिए शीतल जी, आप क्या बोलना चाहती हैं? All having a lots of fun. This is our one of best family holiday. तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। एंड लक्ष्मण कह रहा है कि नहीं अब नहीं जाना, 1 किलोमीटर है। मैंने कहा नहीं जाना तो है, व्यू तो देखना है। आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो एंड हैव अ लुक ऑन द ब्रिज। इट्स a steep, quite a bit steep.